questions are joints. Joints. और joints में सबसे खास एक जॉइंट जो लोअर लिम्ब का अभी तक आपको कैसे सिखाया नहीं मेरे को मालूम है. उसको भी धक्का दो. नी जॉइंट. तो जया मैडम आने तक अपन डिस्कस करेंगे नी जॉइंट के बारे में. कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मॉडिफाइड हिंज, टाइप ऑफ जॉइंट इटसेल्फ. मेरे मतलब ऐसा मला स्फुरण चढतं ते बोलता. What type of joint is knee joint? It is a compound because more than two bones are involved. Complex because presence of meniscus. Compound, complex, modified hinge joint. Modified hinge because उसमें थोड़ा रोटेशन भी होता है. मैंने आपको दिखा है कंजंक्ट एंड एडजंक्ट रोटेशन. ये एडजंक्ट रोटेशन है, इंडिपेंडेंट. कंजंक्ट उसके साथ होता है लॉकिंग अनलॉकिंग. वो सीखा है ना लॉकिंग अनलॉकिंग. नेक्स्ट टाइम आई कवर दैट. ओके. So modified hinge because slight rotation होता है semiflex position, which is a combination of two joints. A condylar joint between femur and tibia and a saddle joint between femur and patella. टाइप ऑफ जॉइंट. मैं अगर कोई बच्चा अगर मेरे को ये पूरा बोल के दिखा दे ना एग्जाम में, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज नी जॉइंट, साइन नाउ विल. तळ पायाची आत मस्तकाला जाते. साइन नाउ विल बोलतो. फायर इन माय सोल goes to my head. Okay. So it's a compound, complex, modified hinge joint of synovial variety, which is a combination of two joints. A condylar joint between femur and tibia and a saddle joint between femur and patella. Articulating surfaces. सुपीरियरली क्या है, इंफीरियरली क्या है. तीन आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस है. और एंटीरियरली क्या है. सुपीरियरली आर द कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर. इंफीरियरली आर द कॉन्डाइल ऑफ टिबिया. एंड एंटीरियरली इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ patella. These are the articulating surfaces. Anterior, inferior, superior, inferior and anterior. बरोबर समझ. तुझं नाव काय? हाँ तू हनुमान टेकडी. प्रगती. चौरसी. हाँ. ओके. फिर उसके बाद आता है, आता भी जरा फास्ट जातो है. उसके बाद आता है लिगामेंट्स. बरोबर. लिगामेंट्स आणि कॅप्सूल. सपोज ये मीडियल साइड है और ये लैटरल साइड. मीडियल साइड पे हमको तीन लाइंस ड्रॉ करना है. एक वो है कैप्सूल. दो डीप पार्ट और तीन सुपरफिशियल पार्ट ऑफ टिबियल कोलैटरल लिगामेंट. किसका डाइवोर्स हुआ है इसके साथ? टिबियल कोलैटरल लिगामेंट के दो पार्ट है. क्या है? डीप पार्ट है, सुपरफिशियल. तीन लाइंस क्या है? कैप्सूल, डीप पार्ट एंड सुपरफिशियल पार्ट ऑफ टिबियल कोलैटरल लिगामेंट. ओय तीन लाइन्स कळाले का काय? लपतो कुठे रे? तुझ्या मागे लपलेला. लपने का नाही है मेरे सामने. लपने का
हाँ मैं तू नहीं रे, तेरे पीछे का लड़का जो लप रहा था इसमें, तेरे पीछे, छुपने का नहीं। कैप्सूल समझ है ना, लेकिन अभी मैं बाजू हटा तो समझा ना, नहीं तो फीस का रिफंड मांगने को मत जाके हमको। चलो मैं इस साइड आ जाता हूँ। इस साइड में 3 लाइन ड्रॉ करने का, मारने का नहीं, 3 लाइन ड्रॉ करने का। पहला लाइन क्या है? ऑब्लिक्वेस, इंट्राआर्टिकुलर। दूसरा लाइन क्या है? कैप्सूल। तीसरा लाइन क्या है? फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट। 3 लाइंस मीडियल साइड पे और 3 लाइंस लैटरल साइड पे। लैटरल साइड पे 3 लाइंस है, वो क्या है? तमन्ना क्या है? 3 लाइंस लैटरल साइड। सबसे पहले पॉप्लिटियस का टेंडर, उसके बाद कैप्सूल, उसके बाद बस ये डायग्राम निकालो का आपको आधा मार्क मिल जाता है। 3 लाइंस इधर, 3 लाइंस उधर। ओके, हो गया क्लियर? उसके बाद एक डायग्राम आप और निकाल सकते हो। अरे एक लाइन और ड्रॉ कर सकते हो, वो है बाकी के हमारे लिगामेंट्स। मेडिकल कॉलेज लाहौर, अरे हम लोग अंग्रेजों के जमाने के कॉलेज में सीखे बाबा। ग्रैंड मेडिकल कॉलेज 1845 का कॉलेज था हमारा, तो उसमें न्यूमोनिक ऐसा था, मेडिकल कॉलेज लाहौर। तो तब से, तभी लाहौर इंडिया में था ना, कॉलेज बना तभी। चलो लातूर मेडिकल कॉलेज, लातूर वाले खुश। ये डायग्राम अब तो हो गया। फिर ये मेडिकल को मेडिकल से मिलाओ, लातूर को लातूर से मिलाओ, तो ये सर्कुलर है, ये सेमी सर्कुलर। ये एंटीरियर क्रूसेट है, ये पोस्टीरियर क्रूसेट। एंटीरियर क्रूसेट है, पोस्टीरियर क्रूसेट। ये एक डायग्राम हो गया। और एक डायग्राम, एंटीरियर क्रूसेट जाता है ऐसे, पोस्टीरियर क्रूसेट जाता है ऐसे, बरोबर। और इसको सजाओ, यहाँ पे निकालो मीडियल मेनिस्कस, यहाँ पे निकालो लैटरल। लैटरल मेनिस्कस इज अटैच्ड टू पॉप्लिटियस, इसके लिए पॉप्लिटियस उसको बार-बार बाहर खींचता है, इसके लिए लैटरल मेनिस्कस डज नॉट गेट क्रश्ड, मीडियल गेट्स क्रश्ड वेरी इजीली। ओके, मेनिस्कल टियर, उस पे ऑर्थोपेडिक लोगों का धंधा चलता है। बच्चे लोग फुटबॉल खेलते हैं, मेनिस्कल टियर होता है, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ज्यादा किसी को इम्प्रेस करने के लिए जंप पे मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, किक मारते हैं, और फिर ऑर्थोपेडिक्स। नी जॉइंट, तो ये सब क्लियर है अभी तक जो मैंने आपको बताया? मेरे को न्यूरो एनाटॉमी हम लोग ने सिखाने को दिया नहीं हो आज। बीच का नाम क्या है? नी जॉइंट मतलब 2 कोलैटरल लिगामेंट्स, टिबियल कोलैटरल एंड फिबुलर कोलैटरल। किसने बोला सर? दूध का पर काय नाव तुझं? भगत सिंग उभा राहतो। हाँ, तो नाव काय तुझं? हाँ, शुभम। तू असा उभा राहा, तुझ्या मागचा असाही लपतोय, तसाच उभा राहा, तुला व्यवस्थित लपता येईल। 2 collateral ligaments, okay, 2 menisci, 2 cruciate. इथपर्यंत समजलं? 2 thicknings of the capsule, बस रे शुभम। 2 thicknings of the capsule, एक को बोलते हैं coronary ligament, thicknings deep to meniscus, एक को बोलते हैं short lateral ligament, thickening deep to fibular collateral ligament, short lateral ligament,
याद रहा? ठीक है. Like 2 oblique ligaments. Sorry, 2 popliteal ligaments. 2 popliteal ligaments. काय आहे ना, मी माझ्या लेटंट मेमरीवरती तुम्हाला हे शिकवतोय. म्हणजे मी जॉईंट वाचलेलंच नव्हतं, मी आपला असा चालू आणि तुम्ही रिफ्यूज केलं न्यूरो अनॅटॉमी शिकायला, म्हणून सडनली मी हे शिकलो. 2 popliteal ligament, 1 oblique popliteal ligament. इसका नाम आपने कभी सुना है? popliteal fossa. शुभम, oblique popliteal. सेमी मेम्ब्रेनोसिस के टेंडन से जो एक्सटेंशन निकलता है उसको oblique popliteal ligament बोलते हैं. That forms the floor of the popliteal fossa. Oblique popliteal. और दूसरा arcuate popliteal. ये शॉर्ट लैटरल लिगामेंट का एक्सटेंशन होता है, arcuate popliteal. Arcuate popliteal ligament. 2 मेनिस्काय मालूम है, मीडियल मेनिस्कस आणि लॅटरल मेनिस्कस. 2 क्रुशिएट मालूम है, एंटीरियर क्रुशिएट, पोस्टीरियर. तो एंटीरियर क्रुशिएट टिबिया से एंटीरियर में निकलता है. और ये इंसर्शन कहाँ पे? क्रुशिएट के एंटीरियर क्रुशिएट का कहाँ पे इंसर्शन? फीमर पे है इंसर्शन दोनों. एंटीरियर का कहाँ पे? हाँ, मीडियल सरफेस ऑफ लॅटरल कॉन्डल. बरोबर, चेक करा. मीडियल सरफेस ऑफ लॅटरल कॉन्डल. पोस्टीरियर का लॅटरल सरफेस ऑफ मीडियल कॉन्डल पोस्टीरियर. पोस्टीरियर का एंटीरियर, पोस्टीरियर का होगा एंटीरियर, एंटीरियर का होगा पोस्टीरियर. बघ रे लवकर, बरोबर ना? सो एंटीरियर क्रुशिएट ऐसा जाएगा पीछे, विल बी इंसर्टेड ऑन द पोस्टीरियर पार्ट of medial surface of lateral condyle. Posterior cruciate will go anteriorly, will be inserted on anterior part. Posterior cruciate will go in the anterior part of lateral surface of medial condyle. Abhishek, anterior cruciate goes posterior, so gets inserted on posterior part of medial surface of lateral condyle. Posterior cruciate goes anteriorly, gets inserted on lateral anterior part of lateral surface of medial condyle. जास्त डोकं पकलं. Anterior cruciate gets inserted on lateral condyle, posterior gets inserted on medial condyle. मार्क मिल जाए. Okay? So 2 collaterals, 2 thickenings of the capsule. छोड़ दो. 2 popliteal, oblique popliteal extension of semimembranosus tendon, arcuate popliteal extension of short lateral ligament. 2 menisci, 2 cruciate. इतना सब करके क्वेश्चन आता है इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द नी जॉइंट. अब इतना सब मीडियल कोलैटरल हो, 3 लाइन इधर 3 लाइन उधर, 3 लाइन पूछते हैं, नहीं सीधा पूछते हैं इंट्रा आर्टिकुलर. अंदर क्या है? अंदर है क्रुशिएट और मेनिस्कस. और इनका सबका ब्लड सप्लाई क्या है? पॉप्लिटेल आर्टरी के 5 ब्रांचेस हैं. सुपीरियर, मीडियल, सुपीरियर, लैटरल, जेनिकुलर, मिडल इंफीरियर, मीडियल, जेनिकुलर, इंफीरियर, लॅटरल, जेनिकुलर, मिडल जेनिकुलर. आणि 5वी ब्रांच कोणते? मिडल जेनिकुलर. मिडल जेनिकुलर. पॉप्लिटेल आर्टरी जो है ये अगर नी जॉइंट है उसके ऊपर से ऐसी जाती है सुपीरियर, मीडियल, सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर, सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर, इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर, इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर एंड मिडल जेनिकुलर. ये मिडल जेनिकुलर ऑब्लिक. लास्ट पेज, झोपलेली पोरगी. अरे तू तो फर्स्ट बेंच है, हेडेक हो रहा है. मिडल जेनिकुलर आर्टरी will pierce which ligament? Oblique popliteal ligament. Which ligament? स्वेदीच्या बाजूची पोरगी. काय नाव तुझं? मृदुला, डोंबिवली. हा, तर कोणती आहे ती? आर्क्युएट नाही, ऑब्लिक पॉप्लिटेल लिगामेंटला ती पिअर्स करणार, नी जॉइंटच्या आत जाणार
आणि या सगळ्यांना सप्लाय करणार. कशाला सप्लाय करणार? क्रुशिएट आणि मेनिस्कस. Meniscus. So blood supply of cruciate and meniscus Middle genicular artery. is middle genicular Genicular artery. Now supply of the knee joint. The knee joint is supplied by the femoral nerve and now to कोण गेले ते दरिद्री फोन कंपनीचे लोक कोण येते? Yes. वास्टस मेडियालिस, वास्टस इंटरमेडियालिस आणि वास्टस VIVMV. काय मॅडम आल्या की मला सांगायचं. सो femoral nerve of the knee joint discuss कर. Femoral nerve आहे now to vasta. Obturator nerve आया हाँ तेरे पीछे का लड़का. हाँ विदाउट एप्रन बैठा है हीरो. तेरा टी शर्ट अच्छा है. एप्रन किधर? क्या नाम है तुम्हारा? जोर से बोलेगा. अरे एप्रन डालना बेटा. हाँ ऑब्जर्वेटर में वो आया. नाम आया. आप बोलेंगे ऑब्जर्वेटर नाउ फिर आता है मूवमेंट्स. फ्लेक्शन एक्सटेंशन. एक्सिस क्या रहेगा? फ्लेक्शन कॉज्ड बाय हैमस्ट्रिंग्स, गैस्ट्रोक्लेमियस, पॉप्लिटियस. फक्त हैमस्ट्रिंग म्हणजे अर्धे मान. इम्प्रेशन गॅस्ट्रोक्लेमियस, पॉप्लिटियस. एक्सटेंशन कॉज्ड बाय लवकर बोलावं मला असं बोलायचं नाही का? quadriceps femoris, vasta and rectus femoris. Conjunct rotation. Conjunct adjunct. बरं हे काय आहे? Independent rotation is called as लवकर बोल, बघून बोल. Independent rotation is called as knee joint मध्ये so one rotation happens in a semi-flux position. That medial rotation is by semimembranosus, semitendinosus, and lateral is by biceps femoris. So in a semi-flex knee, rotation होते. काय म्हणतात त्या रोटेशनला? तुला दाखवतो कुठे वाचायचं. So that is adjunct rotation. इधर लिहिलेलं नाही adjunct. Conjunct happens. So ये movements देखो. पहला क्या बोला? Flexion. दूसरा क्या बोला? Rotation. Rotation में दो. Adjunct and conjunct. Adjunct अब चेक करोगे. Adjunct is independent. In a semi-flex. Conjunct happens during locking and unlocking. अभी locking and unlocking क्या है? बच्चे लोग डिसेक्शन हॉल में खड़े नी कौन से पोजीशन में? नी एक्सटेंशन. तो आपको ऐसा होता है कि डिसेक्शन को क्या हो रही है 3 घंटा खड़े थे बहुत क्वाड्रिसेप्स पेन हो रहा है. नहीं, बिकॉज नी गेट्स लॉक्ड एंड दैट रिलैक्सेस द क्वाड्रिसेप्स. तो हम ज्यादा टाइम खड़े रहे तो वो क्वाड्रिसेप्स नहीं दुखते. वो एक्सटेंशन के लिए वो दे डोंट रिमेन इन अ कॉन्टैक्ट. नी गेट्स लॉक्ड. तो आपको मैंने बताया था लैटरल कॉन्डाइल छोटा है, मीडियल कॉन्डाइल बड़ा है. तो जब एक्सटेंशन होता है तो एंड स्टेज ऑफ एक्सटेंशन में लैटरल कॉन्डाइल इज यूज्ड अप. सो दैट एक्ट्स एज अ एक्सिस. उस पे मीडियल कॉन्डाइल ऐसे मीडियली रोटेट होकर लॉक. अनलॉक करते समय लैटरल साइड पे पॉप्लिटियस है वो ऐसा करता है, फिर फ्लेक्शन. दैट मीन्स एक्सटेंशन, एंड स्टेज ऑफ एक्सटेंशन लॉकिंग. मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर ओवर टी, लॉकिंग. फ्लेक्शन करना है, अनलॉक. lateral rotation of femur over टी में flexion. वापस एक्सटेंशन, एंड स्टेज लॉकिंग. कैसा होगा लॉकिंग? मीडियल
रोटेशन ऑफ फीमर और फिर अनलॉकिंग कौन करता है? ऑक्यूलिस। ऑक्यूलिटियस। लॉकिंग कौन करता है? क्वाड्रिसेप्स। एक्सटेंशन लॉकिंग बाय क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स, अनलॉकिंग बाय ऑक्यूलिटियस। सो एक्सटेंशन लॉकिंग, अनलॉकिंग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन locking, unlocking flexion. Clear? How does locking happen? Medial rotation of the femur or tibia, because lateral condyle is used up and it acts like an axis. So lateral condyle axis करके काम करता है, ये lateral side है. Lock. Why locking, unlocking is needed? So to relax the quadriceps in standing position, so that quadriceps need not be continuously contracted. So end stage of extension में क्या होता है? Locking of knee. और flexion के पहले पहले क्या होता है? Unlocking then flexion. Unlocking is done by, देखो ना, देखो logically, ये medial side, ये lateral side है. Lateral condyle is used up, locking हो गया. अभी unlocking के लिए ऐसा करना है. तो यहाँ पे लैटरली है टेस्ट का क्या है? तमन्ना पानी पी रही तो इधर मैं इधर भूखा प्यासा, अरे बाबा मैं जोक कर क्या है? अनलॉकिंग फ्लेक्शन. चलो वापस एक्सटेंशन 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 लॉकिंग। फिर अनलॉकिंग फ्लेक्शन। अभी एक्सटेंशन एक्सटेंशन एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन ऑफ द फीमर और टिबिया, लॉकिंग. फिर लैटरल रोटेशन ऑफ फीमर और टिबिया, अनलॉकिंग फ्लेक्शन. क्या बात है, चैंपियन हो गया आप लॉकिंग अनलॉकिंग. अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी, ये कुछ नहीं सूझा, देखा कि 2 मार्क है, कैसे मिलेगा वो 2 मार्क? अर्थराइटिस, नी जॉइंट मतलब अर्थराइटिस. क्यों होता है? बॉडी का वजन बढ़ गया, टिबिया फीमर एक दूसरे के ऊपर घिसने का चालू, आर्टिकुलर कार्टिकुलर, ओवरवेट पीपल, टिबिया फिबुला, they rub against each other, commonly affected knee joint, घुटनों का दर्द. तो इसके लिए यूज करें ऑर्थो ऑयल, बट उससे कुछ नहीं, वजन कम करो पहले. दूसरा कुछ नहीं याद आ रहा है, नी रिप्लेसमेंट. उसके बाद क्या होगा? नी रिप्लेसमेंट, सर्जन. तीसरा कॉग्जा वालगा, कॉग्जा वाल, बस ओके, खेल खत्म. थैंक यू सो मच. लेकिन आपने मेरे से आज मुझे सिखाने में